Hello bachcho, let's see the question here. Which of the following factors may be regarded as the main cause of lanthanide contraction? 1. Poor shielding of one of 4f electron by another in the subshell. 2. Effective shielding of one of 4f electrons by another in the subshell. 3. Poorer shielding of 5d electrons by 4f electrons. 4. Greater shielding of 5d electrons by 4f electrons. So here we will start our solution. और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से इस केस में. So key concept, we know that during lanthanide contraction, here what happened? Electrons are filled in 4f subshell. So as we know that when electrons are filled in 4f subshell and जो shielding power होता है, this is maximum for S subshell, then we have P, then D and least होता है F subshell के लिए. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि जब 4f सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होंगे उस वक्त क्या होगा? यहाँ पर पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होगा. तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ये क्या होता है? दैट इज कि ये जो एफ सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे वोंट अलाउ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टू अट्रैक्ट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स. ओके, बट हियर इन दिस केस वी हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट. दैट मीन्स कि यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है दैट मीन्स जेड इफेक्टिव ये एक्टिव होगा एंड एज ए रिजल्ट जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे they will come close to nucleus as compared to previous elements with lesser atomic number, and due to this as a result radius will decrease with increase in atomic number. That means this is the lanthanide contraction जिसमें क्या होता है? Due to poor shielding effect of 4f subshells, size of elements decreases. So here, if we see the options, option 1 says poor shielding of one of 4f electrons by another in the subshell. This is true. If we see option 2, उसमें क्या बोला गया? Effective shielding. This is incorrect because यहाँ पे shielding effect less होता है, not the effective one. Third में बोला है poorer shielding of 5d electrons. यहाँ पे हम 4f subshell की बात कर रहे हैं, not about 5d. So 3 and 4 are eliminated. 1 is correct option. I hope you understood the explanation. All the best.